हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग का विषय है एक फैमिली पानीपुरी खा रही है। इसमें एक लड़का और उसके माता पिता एक पानीपुरी के ठेले पर पानीपुरी खाती हुई दिखाना है। ड्राइंग शुरू करने से पहले दूसरे पेपर पर 3-4 छोटे आकार के रफ स्केचेस बनाइए और उसमें से जो अच्छा लगे उसी को फाइनल ड्राइंग बनाइए। कभी कभी समय ना मिलने के कारण ड्राइंग अधूरा रह जाता है, इसलिए समय का नियोजन होना जरूरी है। पहले 15-20 मिनट रफ ड्राइंग, अगले 20 मिनट फाइनल ड्राइंग और आखिर के 20 मिनट कलर सुखाने और फाइनल टचअप के लिए दीजिए। 1 घंटा कलर के लिए दीजिए। इस वीडियो में आगे मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखिए। यह होगा फाइनल ड्राइंग। अब इसे कलर करते हैं। बड़े आकार में कलर देना है तो 10 नंबर का ब्रश इस्तेमाल कीजिए और छोटे आकार के लिए 6 या 4 नंबर का ब्रश इस्तेमाल कीजिए। फाइनल ड्राइंग पर कलर करने से पहले हर बार दूसरे कागज पर कलर टेस्ट कीजिए। अगर आप वाटर कलर इस्तेमाल कर रहे हो तो लाइट कलर पहले दीजिए और अंत में डार्क कलर दीजिए। स्किन कलर बनाने के लिए ब्राउन और रेड कलर मिक्स करके उसका लाइट शेड बनाइए।
कलर करते समय प्योर ब्लैक कलर मत दीजिए, उसमें थोड़ा सा रेड मिक्स किया तो हेयर कलर ज्यादा नेचुरल लगेगा। यह हो गया कलरिंग। अब इसमें आउटलाइन और डिटेलिंग करते हैं। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आप स्केच पेन या कलर पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो।
ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।